Assalamu alaikum dear students. क्लास 11 यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट दैट इज thermodynamics. In the previous video lecture in this thermodynamics unit we discussed what is a system किसे कहते हैं, then we have the surroundings किसे कहते हैं, we have the boundaries are of following types, that is the real boundary, imaginary boundary, diathermic wall, adiabatic wall, etc. Then we have the types of the systems, that we have open system, we have closed system, and we have the isolated system. Then we go through the state variables. आज का जो टॉपिक है that is the thermodynamic properties. thermodynamic टॉपिक जो है that is thermodynamic properties. thermodynamic properties थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. नंबर फर्स्ट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं. अगर हम एक क्लोज्ड सिस्टम लेंगे, उसको हम दिस क्लोज्ड सिस्टम इट हैज अ वॉल्यूम, it has a temperature, it has a pressure, it has number of moles, it has mass, etc. If we divide this closed system into two or many parts and those properties whose value changes, those are called as the extensive properties, while as those properties whose value do not change, those are called as the intensive properties. So हमने क्या कहा, हमने ये कहा अगर हम एक क्लोज्ड सिस्टम लेंगे, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे into two or more types, into two or more parts, those properties whose value changes, those are extensive properties, and those properties whose value do not change, those are intensive properties. For example, हमारे पास ये सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है, हमने इसको अब डिवाइड किया है into two parts. अब देखो वॉल्यूम जो है इसका, इस सिस्टम का, वो चेंज हो गया, डिवाइड हो गया, दैट इज V/2 एंड V/2. नंबर ऑफ मोल्स भी डिवाइड हो गए, N2 एंड N2. टेम्परेचर लेकिन सेम रहा, टेम्परेचर डिवाइड नहीं होगा, जो इस पार्ट का टेम्परेचर होगा वो इस पार्ट का भी होगा, दैट इज T. and pressure it also remain the same. So those properties whose value change, for example volume का जो वॉल्यूम जो है it gets changed. Similarly number of moles it gets changed, while as temperature and pressure they remain same. So those properties whose value change, those are extensive properties, and those properties whose value do not change, those are intensive properties. So we have extensive properties. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टीज which depends upon the quantity of the matter, those are called as extensive properties, and those properties who depend upon the quality of the matter, quality of the substance, उनको हम कहते हैं intensive properties, whereas extensive property which depends upon the quantity of the matter or quantity of the substance properties. Number first, these are those properties which depend upon the quantity of the substance. उनको हम कहते हैं extensive properties, while as intensive properties are those which depend upon the quality of the substance or quality of the matter. Number first point इसमें which depends upon the nature or quality of the substance.
उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नंबर दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, व्हाइल एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम। नंबर सेकंड पॉइंट जो है दैट इज, सेकंड पॉइंट जो है इसमें, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज of the system। ना इसमें it does not depend upon the size of the system। This is the definition of the intensive and extensive property. Intensive properties are those properties which depends upon the quantity, whereas intensive properties are those which depends upon the quality of the substance। नंबर सेकेंड, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंडेंट होती है? द साइज ऑफ द सिस्टम, साइज कितना है, बड़ा है कितना छोटा है सिस्टम का, वो प्रॉपर्टीज डिपेंड, द प्रॉपर्टीज वी डिपेंड अपॉन दोज थिंग्स, those are called as the extensive properties, while as the intensive properties are the properties which do not depend upon the size of the system, those are called as the intensive property। अब हम कुछ points पढ़ेंगे regarding the intensive and the extensive properties। Points regarding the this was the definition of the intensive and extensive property। Now the points regarding important points regarding extensive and intensive properties। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आप याद रखोगे, if we have two extensive properties, that is number first point, if we have two extensive properties, that is A and B, these are suppose extensive properties। अगर हम इनका रेशो लेंगे या डिफरेंशियल अगर हम इनका लेंगे, that is रेशो A is to B रेशो, या अगर हम डिफरेंशियल लेंगे that is the DA divided by DB, इनका हम डिफरेंशियल अगर लेंगे या अगर हम इनका रेशो लेंगे, that is always equal to an intensive property। So we have the two extensive properties whose ratio or differential is always an intensive property। अगर हम इनका रेशो लेंगे इन दो का या इनका जो हम डिफरेंशियल लेंगे, that is always equal to an intensive property। Examples of the extensive, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे the ratio of the, we have the two extensive properties, their ratio or differential is always an intensive property। नंबर सेकेंड पॉइंट, अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेंगे पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट अगर हम लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वी हैव mass is an example of extensive property। volume जो है that is also an example of the extensive property। heat capacity भी है example किसकी, extensive property की। इसी तरह से है internal energy, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, internal energy, enthalpy, entropy, etc. Those are all the examples of the extensive properties। Similarly, we have the intensive properties। intensive property की examples है intensive properties। examples जो है intensive properties की,
That's we have the temperature, we have pressure, we have molarity, we have density. Similarly, we have pH, we have EMF, etc. These are the examples of the intensive property. तो point इसमें हमने पहला point जो discuss किया, the ratio of the two extensive property is always an intensive property. For example, अगर हम ratio लेंगे दो extensive properties का, for example, we have mass per volume, अब किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर. सो ये भी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन इनका रेशियो जो है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट्स कॉल्ड द डेंसिटी. सिमिलरली वी हैव द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखोगे पॉइंट्स में रिगार्डिंग द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास या पर मोल अगर हम लेंगे, तो that becomes an intensive property. So if the extensive properties are expressed as, if extensive properties are, number second point, if extensive properties are expressed as per unit mass or per unit volume. If extensive properties are expressed as per unit mass or per unit volume, it becomes an intensive property. For example, mass per unit volume, it becomes density. Similarly, we have heat capacity, but we have the heat capacity per mole, that becomes an intensive property. Heat capacity जो है, heat capacity वो क्या है, वो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. लेकिन अगर हम लिखेंगे हीट कैपेसिटी पर मोल, so this became an intensive property which is called as molar heat capacity. Second point आपने याद रखा regarding the extensive and the intensive property में, अगर हम extensive property को लिखते हैं per unit volume और per unit mass और per unit moles per mole अगर हम लिखते हैं, तो that becomes an intensive property. For example, we have the heat capacity. Heat capacity जो है that's an example of the extensive property. But अगर हम heat capacity को लिखते हैं per mole, heat capacity per mole, it becomes an intensive property. That's the molar heat capacity, which is an intensive property. This was regarding the intensive and extensive properties. Intensive and extensive property में आपने याद रखा, extensive properties are those properties which depend upon the quantity of the substance, those are called as extensive property. Which depends upon the size of the system, those are called as extensive property. While as the intensive property which depends upon the nature or the quality of the substance, and they do not depend upon the size of the system. Then we have the important pointers regarding the intensive and extensive properties. Similarly, we have the another term used in the thermodynamics, that's called as the state function. So we have another term used in thermodynamics, that is state function. State function. Number second जो है that is state function. State function किसे कहते हैं? State function is the function which depends upon the initial and the final state of the system. For example, we have two systems, that is A system and we have the B system. Those properties which depend upon this A system or the B system, those are called as state functions, but does not depend upon how the A system is converted into the B system. Suppose हमारे पास है A system, हमने इसको convert किया है B system में. अब हमने इसको convert किया है, कैसे convert किया है, लेकिन उस पर dependent नहीं है, बल्कि किस पर dependent है, state of the system. इन दो systems पर depend upon है
उन फंक्शंस को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई पर्सन है इन दिस सिस्टम, सपोज दिस इज आवर ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर एक पर्सन ए है, उसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये कहाँ पहुंच गया, इनटू द फर्स्ट फ्लोर, दैट्स आवर बी फ्लोर, it reaches here and here it has certain value of potential energy. Suppose that's a, this our system 1 and this our system B। second सिस्टम 1 में इस A की पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, लेकिन जब ये पहुंच गया इनटू द सिस्टम B, it has the potential energy but that value is different from this। now जो ये potential energy depends upon the system 1 and system 2, it does not depend upon ये person जो यहाँ पे था ग्राउंड फ्लोर पे, ये कैसे पहुंच गया, ये टांगों से चल के ऊपर आया या ये लिफ्ट थ्रू ऊपर आया, इस पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि किस चीज पर डिपेंडेंट है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। तो उन फंक्शंस को हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस आर द फंक्शंस, the properties which depend upon the initial and the final state of the system, those are called as the state function। So state function we have state function which depends upon the initial and final state of the system। definition में आप याद रखोगे, what are state functions? State functions are the functions which depend upon the properties which depend upon the initial and the final state of the system, those are called as the state functions। and this state function, it is represented by del, it is represented by del or del। for example, we have del E, that is internal energy change, we have del H, these are state function, these are the examples of state function। del E is called as the internal energy change, del H is called as the enthalpy change, del S it is called as the entropy change। these are the examples of the state function। so state function आपने याद रखा, state functions are the functions which depend upon the initial and the final state of the system, those are called as the state functions। now we have the another term used in the thermodynamics, that's called as a process। process किसे कहते हैं, process process प्रोसेस कहते हैं चेंज को और कन्वर्शन को। conversion of one system into the another system is called as a process or that's called as a change। for example, हमारे पास सिस्टम A है, हमने इसको कन्वर्ट किया है इनटू सिस्टम B, जो ये कन्वर्शन है सिस्टम A का इनटू द सिस्टम B, that is called as a process। so process is the conversion of the system, one system into the another system, that's called as a process। and we have the following types of processes used in the thermodynamics, and it's the following types। number first, isothermal process, isothermal process। number 2, we have isobaric process। number 3, we have isochoric process। we have adiabatic process। similarly, we have reversible process। number 4, 6, we have irreversible process। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। कन्वर्ट करते हैं हम सिस्टम ए को इनटू द सिस्टम बी, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं,
तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को. सो आइसोथर्मल प्रोसेस वी हैव isothermal process. Isothermal process. Isothermal process. It is the process in which temperature remains constant. Temperature जो होता है that remains constant, that process is called as an isothermal process. For example, अगर हम boiled ज़ा में लेते हैं, जैसे हम boiled ज़ा में लेते थे, that is the P is inversely proportional to V और V is inversely proportional to P. लेकिन यहाँ पर हम क्या करते थे, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते थे. एंड द ग्राफ कैसे आता था, इट इज लाइक दिस, rectangular hyperbola, that is P and V. So this is an example of an isothermal process. The isothermal process is that process in which the temperature remains constant. That process is called as an isothermal process. Similarly, we have the number second, that is called as the isobaric process. वो प्रोसेस जहाँ पर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस. नंबर सेकेंड, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस. In which pressure is kept constant. जहाँ पर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, वी हैव द वॉल्यूम वर्सेस द प्रेशर एंड द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. That process is called as an isobaric process. Similarly, we have another process that's called as the isochoric or isochoric process. Number third, isochoric process. जहाँ पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, where volume is kept constant. वो प्रोसेस जहाँ पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, वी हैव द प्रेशर, वी हैव वॉल्यूम हियर. वॉल्यूम को हम कांस्टेंट करते हैं लाइक दिस. इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. सिमिलरली, वी हैव द एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स. उस प्रोसेस को हम कहते हैं that's called as an adiabatic process. So we have adiabatic process. In which there is no transfer of heat from the system to the surroundings. उस प्रोसेस को हम कहते हैं adiabatic process. So we have the processes. Process is basically the change or the conversion of one system into the another system. That is called as a process. And the process it is of following types. We have the isothermal process where temperature is kept constant. We have the isobaric process where the pressure is kept constant. We have the isochoric process where the volume is kept constant, and we have the adiabatic process. In this process, there is no transfer of heat from the system to the surroundings. In the next video lecture, we will go through the reversible and the irreversible processes. आज के लिए इतना ही. इस वीडियो लेक्चर में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.